Good morning, students. Today we are going to start the basic proportional theorem, basic proportionality theorems or Thales theorems. So in other words, we can say this theorem basic proportional theorems. So students, in this theorem we will discuss about the proof of this theorem. So first of all is children statement is that if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersect the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. So students, the statement is saying if this is a triangle and let us suppose this is side BC and we are going to draw a line DE, a line inside the triangle DE parallel to BC. So then if DE parallel to BC, so then DE divides the other two sides AB and AC in the same ratio. It means AD upon DB equal AE upon EC. So this will be to prove, students. So I hope students you understand. In previous video I have told you the two triangles are said to be similar triangles if their corresponding angles are equal and corresponding sides are in same ratio. So let us take a look, students. If this is a triangle ABC and here is triangle DEF, if angle A equal angle D and B equal E and C equal F, because A corresponding to D, B corresponding to E, C corresponding to F. If angle A equal angle D and angle B equal angle E and angle C equal angle F, students, and AB upon DE equal BC upon EF or equal AC upon DF. So students, then two triangles are said to be similar triangles. So now students, we are taking the proof of this basic proportional theorems. Today this is our topic. So let us take the proof of this theorem, students. So I am going to rub this statement, students. So children, you can see what is given to us. So given, students, a triangle ABC and DE parallel to BC. So make a construction, students. Join B to E and student D to C and draw perpendicular EF and students DZ. These are the perpendiculars, students, you can see. So given triangle ABC in which DE parallel to BC, what we have to prove that? To prove that AD upon DB equal AE upon EC. D will divide the other two sides AB and AC in the same ratio. So now students, make a construction. So construction is join BE CD and draw EF perpendicular AB or DZ perpendicular to AC. This is point G and children, this is point F. Now student, proof. To find the proofs, students, we have to find the ratio of triangle ADE and ratio of triangle DBE, and similarly students, area of triangle ABE and ratio of triangle DCE. Let's look, students. First of all, area of triangle ADE. So student, you know area of triangle 1 upon 2 base into height. So what will be the base here? We consider base AD. And students, height, what will be the height? Height is this perpendicular EF. This is EF. Now students, area of triangle DBE. This will be 1 upon 2 base we will take DB, or height will be, students, height of triangle DBE is equal EF.
How students? How you can say the height of triangle BDE is equal to EF because it is outside. So you can see students, if this is a obtuse angle triangle, suppose this is obtuse angle triangle students ABC, तो what will be its sides? तो हम क्या करते हैं कि इस बेस को एक्सटेंड करते हैं और वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. तो दिस परपेंडिकुलर विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल. इफ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, so 1/2 base BC and height will be student this is AE. तो हाइट AE. तो स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल की हाइट ये आउटसाइड हाइट होगी. ऐसे इस ट्राइंगल DBE के लिए हाइट EF होगी बिकॉज इसको बेस को एक्सटेंड किया है हमने और इस पे इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. दिस इज EF परपेंडिकुलर. आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड. सो now we have to find the ratio of these two, area of ADE upon area of DBE. So it will be become 1/2 base AD height EF, or here also 1/2 base BD or height EF. So student you can see this half remove from this, EF remove from this, so it will become AD upon BD. AD upon BD या you can say DB. So this is equation number first. Now students similarly, if you are going to find the area of again ADE upon area of similar DCE. So student you can see 1/2 base. What will be the base for this triangle ADE? So now we take base AE. And height, what will be the height? Now this is the perpendicular from D to AE. So DG will be height. तो into DG और अपॉन 1/2. अब DCE के लिए स्टूडेंट, DCE के लिए बेस EC और हाइट विल बी सेम DG. ये हाइट बिकॉज इस वर्टेक्स से इस ट्राइंगल के DCE जो ट्राइंगल यू आर सीइंग, इस ट्राइंगल के इस वर्टेक्स से हमने इसके बेस को एक्सटेंड करके इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. तो हाइट विल बी DG फॉर ट्राइंगल DCE. सो नाउ स्टूडेंट यू कैन सी DG रिमूव फ्रॉम DG एंड हाफ रिमूव फ्रॉम हियर, तो AE अपॉन EC. सो एरिया ऑफ ADE इक्वल एरिया ऑफ DCE. सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट यू नो वेरी वेल, if two triangles lies on the same base and between same parallel, then their areas will be equal. So student you can see this triangle DBE and triangle DCE lies on the same base DE. तो दोनों ट्राइंगल के लिए बेस D है और these two triangles lie between the same parallel D and BC. So their area will be equal. So student you can say area of triangle DBE equal to area of triangle DCE. Students area lies between same base. So you know very well students कि area lies between same base and between same parallels. I have written in the notes. So student this is equation number third for you. और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ, नोट थर्ड स्टूडेंट्स इसको अभी रहने दीजिए, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा एरिया DBE और इसका रेसिप्रोकल भी एरिया DCE. ये इक्वल रहेगा क्योंकि अगर 2 = 2 है तो 1/2 = 1/2 होगा स्टूडेंट्स. आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड. अब मैं इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्टूडेंट्स, किसका, एरिया ऑफ ADE का. ऊपर ADE का एरिया मैंने इसमें भी मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स और इधर भी मैंने DBE में भी, इसमें दोनों तरफ मैंने एरिया ऑफ ADE मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स. अभी आप ये देखेंगे भाई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप यहाँ देखें एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE. तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितना है AD अपॉन DB, ADE अपॉन DBE, AD अपॉन DB. तो यहाँ यू कैन राइट AD अपॉन DB और हियर स्टूडेंट्स ADE अपॉन DCE, ADE अपॉन DCE एरिया, AE अपॉन EC. तो दिस इज AE अपॉन EC और यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड. तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम स्टूडेंट्स. I hope students you understand. If there is any problem you can ask in Zoom class. Thank you students.